everybody. Lastly, I have given you one phrasal verb, and this video I am going to give you one more phrasal verb, which is turn around. Basically, when we are using turn around in our daily communication, it means turning in an opposite direction. जहाँ हम पीछे मुड़ के देखते हैं उस चीज़ को बोलने के लिए हम टर्न अराउंड वर्ड यूज़ करते हैं. एट दैट टाइम इट इज़ नॉट द फ्रेजल वर्ब. पीछे मुड़ के देखो अगर आपको कहना है तो प्लीज़ टर्न अराउंड एंड सी द बैक साइड, ऐसे आप बोल सकते हो. बट व्हेन यू यूज़ दिस वर्ड इन अ फ्रेजल वर्ब इट मीन्स टू चेंज समथिंग अनसक्सेसफुल इनटू समथिंग सक्सेसफुल. कोई चीज़ के लिए अगर आप असफल रहे हो, अनसक्सेसफुल रहे हो, उसको अगर आपको पॉजिटिवली सक्सेसफुल बनाना है, उस चीज़ को मेंशन करने के लिए टर्न अराउंड वर्ड यूज़ होता है. Here I have given you 3 examples. Very first is, I am worried about how government will turn the economy around after this corona crisis. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना क्राइसिस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत डैमेज हो रही है, इकोनॉमी पर बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है. तो इन दैट सेंस आई हैव मेड दिस स्टेटमेंट. I am worried about how government will turn the economy around after this corona crisis. Second sentence, if he wants to turn his life around, he needs to stop taking drugs and drinking alcohol. अगर उसको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो उसको ड्रग्स लेना और अल्कोहल लेना छोड़ना पड़ेगा. Last one, planting more trees and saving natural resources can turn around the environmental problem. जो भी environmental problem है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसे पॉजिटिवली बनाने के लिए हमको ज़्यादा ट्री प्लांट करने पड़ेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा. So here I have given 3 different examples of different situations, and I request you all to take actively participation in making statements or sentences and share in the comment section. So I hope you learn the new phrasal verb. I want you all to make one sentence and share in comment section. If you learned something new from me, please like and share my videos. Thank you. Have a good day.